Assalamu alaikum, my dear students. I'm your English teacher, Mr. Ramnaz, and I welcome all of you to my online class. Dear students, today we will start a very inspirational and motivational poem that is In Spite of War, which means Jang ke bawajood, and this poem has been written by Angela Morgan. Dear students, before starting the lecture format, first of all, I would like to clarify the theme of this poem by the help of the picture. Angela Morgan actually lived during World War I and World War II, and she is crying in this poem, and she describes that although in spite of the war there are a lot of miseries, and war causes deaths, pain, sufferings, and conflicts, but still we need to be optimistic, we need to be hopeful. Now, there will be a question in your mind that how we can be hopeful. Although there are a lot of sufferings, because war is a symbol of sufferings, war is a symbol of pain, war is a symbol of death. कि जंग का तो मकसद ही होता है, जंग का मतलब ही यही होता है कि जंग में बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, तबाही और बर्बादी होती है, दुख होते हैं, तकालीफ होते हैं. तो फिर पोइटिस हमें क्यों कहती है कि स्टिल वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक. So let's see why she is saying that still we need to be hopeful. Now, Angela Morgan gives us a lesson that every cloud has a silver lining, and we need to be optimistic. Although there is a lot of pain and suffering due to the World War I and World War II, but still we need to focus on the beauty of the nature in the form of the blooming of the flowers and the form of the beautiful rainbows and the floating clouds. And this nature symbolizes that life continues even when terrible things happen. एंजेला मॉर्गन हमें ये पैगाम देना चाहती है कि बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं दुनिया में जंग की वजह से, लेकिन फिर भी अगर आप नेचर को देखें, नेचर की खूबसूरती को देखें, फूलों के खिलने को देखें और खूबसूरत रेनबोस को देखें, तो आपको ये एहसास होगा कि ज़िंदगी रुकती नहीं है. ऑल्दो टेरिबल थिंग्स हैपन इन लाइफ, ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, दहशतनाक बातें होती हैं जैसे जंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी स्टॉप हो जाती है. नेचर स्टिल कंटिन्यूज. फूल उसी तरह खिलते हैं, बादल उसी तरह बरसते हैं, रेनबो उसी तरह आती है. तो ये जो नेचर है ये हमें इनकरेज करती है that we must be hopeful. So in this poem, poetess encourages us to look at the beauty around us, कि हम अपने इर्द गिर्द खूबसूरती को देखें rather than focus on the negative aspects of our lives. कि अगर हम मनफी पहलुओं को देखेंगे तो we will remain sad, but we should look at the positive aspects of life. कि इतनी ज़्यादा जंग के बावजूद फितरत अपने जोबन पर है, फितरत उसी तरीके से कंटिन्यू है और अपनी खूबसूरती का इजहार कर रही है. तो इट मीन्स कि लाइफ स्टिल कंटिन्यूज, ज़िंदगी फिर भी जारी और सारी रहती है. सो एंजेला मॉर्गन गिव्स अस a sense of hope, and he says that we must have a positive mindset, कि हमें एक मुस्बत सोच रखनी चाहिए और हमें नाउमीदी में भी उम्मीद की किरण को खोना नहीं चाहिए. So I hope that the overall concept of this poem will be quite clear to you. Now let's move towards the lecture format of today's lecture. Now, dear students, first of all, I would like to discuss the key points of the poem in spite of war. कि जंग के बावजूद, ये जो पोएम का टाइटल है, तो इस पोएम के बुनियादी पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी. आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस सब्जेक्ट मैटर एंड थीम ऑफ द पोएम, क्योंकि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में कि इस पोएम का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है. After that, I will start reading and paraphrasing of the first three stanzas. कि मैं पहले read out करूँगी. I will explain each and everything
describing the meanings of the difficult words and the central idea of each and every stanza. और फिर मैं आपको पैराफ्रेज का मीनिंग बताऊंगी कि पैराफ्रेज में और एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क है, एंड देन वी विल स्टार्ट द पैराफ्रेज. फिर हम स्टार्ट लेंगे रिव्यू ऑफ द ग्रामर यूनिट 1 to 5 फ्रॉम यूनिट 5 एट पेज नंबर 51 to 54, जो हमारे पिछले लेसन का था. तो ग्रामर पोर्शन हम एंड में स्टार्ट लेंगे और पोएम हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट. Now let's see the subject matter and theme of the poem, which means the central idea of the poem. Angela Morgan lived during both the world wars. दोनों जो जंगें हुई थी, पहली जंग अजीम और जो दूसरी जंग अजीम, और वो दोनों जंगें एंजेला मॉर्गन ने देखी थी. In this famous inspirational speech, इस बहुत ही मशहूर और मुतासिर कुन पोएम में मॉर्गन शेयर्स दैट डिस्पाइट अ डिवास्टेटिंग वॉर, के बावजूद एक तबाहकुन जंग के, रैंजिंग ऑन जो कि जारी और सारी है, रैजिंग एवरीथिंग इन नेचर, फितरत में हर चीज़ कंटिन्यूड जारी थी, एज इफ गोया के नथिंग वॉज हैपनिंग, कुछ हो ही नहीं रहा था. सो द ब्यूटिफुल ब्लूमिंग लैलिक्स, खूबसूरत खिलते हुए फूल, ट्यूलिप्स, मॉर्निंग ग्लोरी एंड डेजी फ्लावर्स, ये नेम्स ऑफ द फ्लावर्स हैं. सॉफ्टली स्पीक, ये नरमी से बोलते हैं, इजहार करते हैं, टू बी हैप्पी, कि हम खुश हों, एंड ऑप्टिमिस्टिक और पुरुम्मीद हों अबाउट लाइफ, जिंदगी के मुतालिक. द फ्लोटिंग क्लाउड्स अबव द स्काई, आसमान पर ऊपर तैरते बादल, एंड स्पार्कलिंग वेव्स ऑफ द सी, और समंदर की चमकती लहरें, मेक मी रियलाइज, मुझे ये एहसास दिलाती हैं, दैट लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, डिस्पाइट द वॉर, बावजूद जंग के, सफरिंग्स मसाइब के, एंड डेथ और मौत के. लाइफ कंटिन्यूज, ज़िंदगी जारी रहती है, इवन हत्ता के टेरेबल थिंग्स हैपन, कि बहुत ही खौफनाक दहशतनाक चीज़ें होती हैं. सो दिस पोएम इनकरेजेस अस, हमारी हौसला अफजाई करती है, टू लुक एट द ब्यूटी अराउंड अस, कि हमें अपने इर्द गिर्द खूबसूरती को देखना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए, रादर देन ना कि फोकस ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ना कि ज़िंदगी के जो मनफी पहलू हैं अपने, उन पे तवज्जो दें. तो वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव mindset, and we must see and we must learn lesson from nature that continues in the form of blooming of the flowers. So we should also be happy, we should also be optimistic, and we should also stay positive even in the terrible and the most deadly environment and situation of the war. Now dear students, I hope that the subject matter and the theme of this poem will be quite clear to you, and this question is very much important from your paper point of view, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी है, आपने इसको नोट डाउन भी करना है और याद भी करना है. Now let's move towards the reading of the poem and paraphrasing of the poem.